Greetings, ladies and gentlemen. Welcome to the sixth session of Learning Together group. The session begins with a talk by Dr. Raj Chandra Jha, a renowned orthopedic surgeon based out of Ranchi. Dr. Jha has keen interest in journalism, social work, history, literature, spiritualism, philosophy, and sports. During the later part of the session, we have insights from senior journalists like Mr. Vijay Bhaskar, Mr. Kisler, and Mr. Dinesh Juyal, besides the usual Q&A session. Please go ahead and submerge yourself into the interesting knowledge session. Namaskar, sir. And first of all, I should greet Ashutosh ji and all of us on Indian Air Force Day. And as I mentioned in my brief post on Learning Together, that this could be our first unacademic session this evening, because I'll not be talking on any specific scientific, spiritual, or religious topic. It will be some experiences from my own life, some questions that still remain unanswered. The first of all, where do I begin? I begin at the beginning. A 2-year-old boy born in Kolkata is taken to his native place by his father, who is a teacher in a primary school, the native place in Darbhanga. And 2 years old boy, who is normally we don't believe that a 2-year-old child would be proficient enough to quote couplets from scriptures or some epics. But this is what happened with this boy. He went to his village, started quoting couplets from Ramcharitmanas especially, and some from Sanskrit text. To utter surprise of the elders, then some elders gathered together, started asking the boy about who he was and where did he come from. And to their surprise, the answer was in Maithili. It was in Maithili, as I was told by them, not once but umpteenth of time, by my grandparents, my uncles, and people of my father's generation, that my answer used to be a standard reply every time this question was posed to me, that I was a rishi in deep meditation in Rishikesh, tapasya. Maithili mein मैं तपस्या कर रहा था. And I was sent to this place on the request of my grandparents, who had visited Char Dham, Kedar, Badri, Gangotri, Yamunotri a year back. This, when I could understand the implications of what was going on at that age, surprised me. And I still don't know whether I could call this memories from my past birth. Then, at the age of 4 years, again, on a visit to the native place, one of my grandparents, who had gone to a fair for some work related to his agricultural business, didn't return on a particular date that he was supposed to return. He didn't return for 2 days, and everybody was worried. Then I don't know why, but my grandparents again gathered around me and then started asking questions. Nana kab aayenge? And I was told later on that I answered that he had met with an accident. He was safe. He would be back to his village in 3 days' time. And it exactly happened so. Now, this poses another question. Was this clairvoyance or extrasensory perception? What do I call it? Or what do we call it?
I leave it there. These two experiences from my very early childhood, which were actually told to me by others, and I have only faint memories of the 4-year-old boy that I don't remember anything about what I did or said when I was 2 years old. Now, when I was in school, at the age of 12 or 13, I got interested in literature and language. I was in a good school in Kolkata, and I was reading lots of stuff: poetry, prose, Bengali, Maithili, Sanskrit, English, of course. And by the time I was 13 to 14 years old, I had made up my mind to become a professor of English. Where? In Presidency College, Kolkata. Now, what happened was my father, who was very young then, he was again, we were, not he, we were again in our village when he suffered from an acute attack of chest pain, which was many years later when I was in medical college, diagnosed by one of my late professors of medicine as a case of inferior myocardial infarction. Somehow, with no medical help, he survived. But while he was suffering, he made a decision that his son, rather we are two brothers, and he decided that both of his sons would become doctors. And we were obedient children and good at studies. So, continuing my interest in literature, language, I started concentrating on biology, physics, chemistry, etc., and became a doctor in Ranchi. I am a product of Ranchi Medical College, Rajendra Medical College and Hospital. Now it's called Rajan Institute of Medical Sciences. It's an autonomous institute now. So this shift from literature to science, to biological sciences, and the journey or a dream of becoming a professor actually not happening, and I becoming a doctor. What was it? Destiny? Then I was here doing my post graduation, just started my post graduation in a chance encounter with a politician in Jharkhand. I happened to be a part of the team planning to launch a daily newspaper from Jharkhand in Hindi. Those days, only newspapers from Patna, Indian Nation, Aryabhat, Searchlight, and Pradeep, these were the newspapers available in Ranchi, and one day late editions of Times of India, Hindustan Times. Then somebody thinking of launching a Hindi newspaper from a small place like Ranchi, and a doctor becoming a part of the project, and a chance, as I said, it was a chance encounter. And the association initially was very casual. I was supposed to look after the health supplement page. Every week there was a page devoted to health, and I was asked to see that the technical terms used in that supplement were correct. And then it so happened that I was taking more and more of responsibility, editing news, and almost running the show in a few years' time. Again, that made my life a richer, more varied experience. Came in contact with a lot of people. Some of them still remain my good friends. But what was the reason behind it? A doctor straying into the field of journalism. And then another incident that changed the course of my life. Kuldeep Nayyar Saab was on a visit to Ranchi, and we invited him to our press. The Prabhat Khabar, that newspaper is still there, doing well. He was on his rounds to different departments, the editorial, the composing section, the printing section. And while I was taking him around,
many people were asking me questions about their pain in the neck or pain in the leg or somebody having a stomach ache. Doctor Sahab, iska kya karna? So Kuldeep Nair Sahab, after a group photograph, took me aside and said कि तुम डॉक्टर हो, PhD वाले या तुमने MBBS वगैरह किया है? I said, sir, I am an MBBS. Just now I have joined MS Orthopedics. He said, from tomorrow you are not coming to the press. You will serve the society better as a doctor. And that was my last day of active journalism. How did and why did it happen? One more incident before I touch the other topics assigned to me. I started a hospital. I was the first medical director of a proposed multidisciplinary hospital. Those were early days in Ranchi. We didn't have many hospitals. It was called City Sai Hospital and Research Center. I was sitting in my chamber of medical director. A young boy just barged into my chamber without asking for permission and said, "Sir, मुझे इस hospital में काम करना. I want to work in. I will work in this hospital, and you pay me 4,500 rupees in a month." I said, "Who are you, and why did you enter the chamber without permission? And who told you that there exist vacancies in this hospital? And who told you to ask me for a sum of 4,500 rupees?" Those days we were appointing general duty medical officers in such nursing homes or hospitals, and they were paid a meager amount of 1,500 rupees per month. And this boy was asking 4,000. He said he was Dr. Bitrisri. I'm taking his name because I'm very proud of his achievements. And he said that he lost his father and he was the eldest in the family and he was to support his mother and his younger brother and sister. And the stipend that was paid to him as a postgraduate student was not enough. The shortfall in his calculation was 4,500 rupees. So I said, okay, you start working from the night shift today itself, and let's see how does things go. At that time, he was a postgraduate student in RMCH, now called RIMS, in surgery. Later on, he shifted to Delhi, then Gurgaon. When Paras Hospital was started, he was the first consultant surgeon there. Now, later on, he said, nowadays he is in Muscat and one of the best known minimally invasive surgeons there. He still remains a very dear, very close junior colleague of mine. And before that incident in the hospital, we had never met, we didn't know each other. Another chance happening. Then my experiences as a doctor, I was asked by Arunji to share some of my experience, and my senior colleague, Dr. Saran, is there, and he must have many such experience I haven't had. We started in 70s, 80s, early 80s as doctors with very primitive infrastructure available to us. But what we had in abundance were good teachers and good interaction with the patients, one-to-one, and depending more and more, or rather exclusively, on clinical judgments and our knowledge. Textbooks, journals were not available in small towns. And if you talk of infrastructure, I'll just cite one example. I was to appear at my final year MBBS examination. I was one of the bright boys of my batch. My professor of medicine called me and another 9 boys who were, in her opinion, were the best before medicine externals came and said कि तुम लोग बहुत अच्छा पढ़े हो, just tell me, answer a few questions
I can introduce you to the externals and you can get good marks if you answer these questions. What were the questions? He asked me, CAT scan ka full form batao. Do you know the full form of CAT scan? Those days it was called computerized axial tomography. Can you imagine a bright student of final year examination about to appear at the examination just had to answer the full form of the abbreviation and he would score good marks. Now CT scans are, now it's called CT scan. It's available all over, even in small places, mufassil towns. And the second question was, can you tell me the full form of HIV? Now everybody knows that it is human immunodeficiency virus. So those were the days. So did we not treat our patients well? Yes, we did. Did we not save lives? Yes, we did. But we were handicapped by lack of infrastructure. So whatever advances have taken place in the field of medicine or medical healthcare delivery system in India has been post 1990. Lots of corporate hospitals have come up with lots of diagnostic facilities, but at a cost. And what has taken out of us as students of medicine is the close interaction that we had when these with our patients when these facilities were not available, and the tendency of depending more and more and more on gadgets rather than our own clinical acumen. And at the same time, the changes that has taken place in curriculum, medical curriculum, the teaching pattern, the postgraduate examination. When we, and Dr. Saran was in the same boat, I believe, after passing final year examination, 1 year of compulsory rotatory internship, 12 months in different departments. And then 6 months of junior housemanship, junior house surgeon, then 6 months of senior house surgeon in the department of choice. In those 12 months, we learned the most of our medical knowledge and acumen. This was done away with, and a 3 years senior residency cum PG scheme was introduced. What happened was that after graduating, after passing final year examination, nobody was interested in wards. Neither the house surgeonship was done away with. Interns were busy preparing for the PG entrance rather than learning the basic tricks. I was going through some posts in our group, learning together, that some products from very good medical colleges lack in these basic acumen. It's because this system of house surgeonship has been done away with. People are busy preparing for PG entrance and not learning the base. And if you don't learn by the side of the patient, you don't learn any time later in your life. So that was my experience, and the rapid strides that the medical science has made in last, say, 2 decades or 3 decades. Uh, most important in the field of anesthesia, in the field of management of trauma, in managing dehydration by simple IV fluids, and the development of ventilators that has saved lakhs and lakhs of lives. We were not having these facilities in our days. Since we have had a long and rather heated discussion about PG entrance system in India, PG need, the fallacies therein, the unfairness of the system when some seats can be bought at the cost of meritorious students. I'll not like to delve into that this evening. We have had enough of discussion on this. But if I have to just give my opinion in one sentence, that would be, can we go back to those days of 1 year of compulsory internships, 1 year of house surgeonship in the department of the choice, and then the examination system those days, entrance examination,
statewide, and some central universities. Those days, only certain very few number of seats were reserved. They were called management quota or the government quota, 1 or 2 seats. One of the examples which often doing the rounds of social media is the daughter of the erstwhile chief minister of Bihar, who got admitted into a medical college, became a doctor, never practiced medicine. But majority of seats were available through competition on merit, of course, with the provisions of the constitution, which grant certain reservation to certain sections of the society. One part of my interaction with friends this evening was to be on journalism, because a doctor straying into the field of journalism for some time, doing well, and still sometimes delving into this dangerous field, I would call these days, because journalism, be it electronic media, print media, or social media, these days, what can I say? They are facing existential crisis. Do I mean to say that when I was active in the field of journalism, everything was hunky dory? There was no risk involved. There was no pressure from the management or the government. No. I believe that press was never free. The press always had to cater to the interests of the owners as well as to the government in power. But editors then and the editorial team had lots of freedom then, and they were at least not afraid of being subjected to raids by investigating agencies and sent to jail, except for those 18 months of legally declared emergency in 75. I'm talking of India only. I'm not talking of trends worldwide. These days, things have changed. In our time, there was news, there were views, and there were advertisements. And electronic media was negligible, social media was not there. So what has changed in last 20, 30 years is now we electronic media, now we have social media, and the categorization of news has changed. There are news, there are paid news, and there are advertisement. This paid news is a new term. It was not there in our time. Since I was running a new daily newspaper, which was owned by a politician who belonged to the then ruling party in Bihar, I know that he had certain interests. We were only given subtle hints that you publish a certain news which would favor the management, which will bring them more advertisement. But we were free. And one of my, I saw Kisle is here, is a very dear friend of mine, Dinesh Jual has joined us. We were a small newspaper, but we published so many news and so many scandals were brought to public domain with meager resources. Those dear people, we didn't have much resources. In fact, the much talked about fodder scam was broken by our newspaper. And we were not afraid. We were not simply not afraid. If I were still there in the newspaper, I would be really afraid of publishing news which would go against the people in power. This is one important change that has taken place in the field of journalism. What else? Before I think I still have some time. Before we start summarizing and inviting questions, I just wanted to mention last Sunday we had a session on sleep, very well presented by Dr. Sarita. This week, two news items have come to my knowledge. One is that
The functional MRI, a study. If I get the link, I'll definitely share. But this was a news shared by one of my very close friends who practices in England, that there is a standard publication in the journal called Brain, where it has been said that functional MRI, serial functional MRI study of brain have shown that deep meditation can actually bring about structural and functional changes in brain. That is one good news, I would say, because now science and this meditation is a different aspect. Pure biological science, medical science is different. This can be of interest to those who are trying to treat diseases related to brain. And the another news that has come to my knowledge is that dreams can be recorded by an MRI like device. This is from Japan. And it can be actually seen in an awakened state, as we see some movies on our screen. That again can be a path breaking finding. Again, I have personally not been able to verify these two news items, but then they shared to me by uh, unimpeachable sources, I should say. Uh, if we allow, I think I have time, uh, 5 minutes for my experiences during COVID. The first lockdown here in India was declared in March 2020. And we were really scared. Afraid is not that, scared, because little information was available about the disease, the virus, and the protocol or the advisories about managing those. But I was facing a problem as a doctor and as someone who has been uh, really connected to the society, especially the poorer section of the society. Do I close my chamber? Do I stop going to the hospital? Do I stop operating to save myself, as was the advisory then? Because we were post 60s senior citizens by definition, and and orthopedic surgeon and neurosurgeons were at the greatest of risk. Now, what was my decision? It was simply guided by one consideration. I didn't have anyone in my family practicing medicine, no doctor in my family. I was the first of my generation. I was practicing in a small place, still a small place called Ranchi. And Dr. Chaudhary knows that, at least he knows four of my friends who left India seeking greener pastures in England and America. Dr. Chaudhary knows four of them. I decided to stay put here. And I started my practice and charging a sum of rupees 10 as consultation fee. I am in the 42nd year of my practice as a doctor. In 2020, it was 38 years. So my dilemma was whether I save myself or I try to pay back something to those who believed in me for all these 38 years. I said, I don't know, but again, this was our first session, calling. I said, I will not shut down my clinic. I will not stop going to the hospital, and I will not stop operating. At the same time, following all the advice that was issued by competent authorities, the advisories, taking all the precautions, my chamber was open. I was treating my patient, I was visiting hospitals, and I was operating on emergency cases, not the routine planned cases. There were cases which could be deferred, which we took on later. So was it my calling? This was my calling.
And I survived all the three waves and I'm here before you this evening. Who helped me? God, Allah, Ishwar, or the blessings and good wishes of those poor people. And it was then during that pandemic that Arunji gave me a task. He mentioned about that in his introduction about me, about some hockey players here in Ranchi, in hockey training center. There were 25 of them here and 11 in Simdega. They were literally abandoned by the authorities. And we could somehow manage to manage the situation, arrange for nutritious food for these children, and then giving them an option to visit me as and when they needed for medical help. That was an experience which would last through my life. And that is how I came in close contact with Arunji. This again was a chance, and this could have been done by somebody else. So this is what as I said, that this is going to be an unacademic session, no particular fixed topic, but three segments that I touched, some experience from my life, and I mentioned certain terms which I don't know fall in the domain of science or pseudoscience or spiritualism or hoodos or whatever. Memories of past birth, clairvoyance, extrasensory perception, divine intervention, and the calling from somewhere. I am here as a student and I want to know your opinion. This is a varied group, people from different sections of society, specializing in different fields, are here. They can help me. And I know this is going to be a very difficult getting pinpoint answers from anybody. This will remain an unsolved mystery. This has always been so. There are people who are working on this domain. To conclude, what has been my philosophy in life? Recently, it can go on and on, but just two lines from a poet, Astabhuj Shukla. He says, कराह सुनकर जो न टूटे वो नींद नहीं वो मृत्यु है. So this is what I believe has guided me through my journey as a doctor and as a journalist when I was fully active there. Thank you very much. I believe I have not exceeded the time allotted to me. Thank you very much for patient listening. So, can I say something, Dr. Jha? Sure. Okay. So, the meditative mind, a comprehensive meta-analysis of MRI studies, was published in 2015. First one, which is the meta-analysis. But they excluded the EEG part. And that was our question, that anyone have studies, because alpha, beta, theta, all those are normal waves. And theta and delta waves are basically during sleep. So if someone is showed the slide that there was a delta wave and theta wave during meditation, how do you differentiate during meditation? You are not sleeping. So that was the study we were looking for, that if someone has done this kind of study where included, in terms of functional MRI, yeah, there are multiple studies show the improvement in hippocampus and all other area of the brain. And about meditation, there are plenty of medical studies done already. It was the EEG study, that's all. And it was great meeting you, sir. This is very enlightening. Thank you. Ashutosh, Ashutosh, can you see hands being raised? I don't see any hands being raised as yet. Okay. We have
We have two practicing journalists here, Islay and Dr. Bhaskar. Dr. Bhaskar has gone more into research, academic research of journalism, and Kisley is of course practicing. Dr. Bhaskar and Kisley, to start with Dr. Bhaskar, आप कुछ कहना चाहेंगे सर, जो भी जर्नलिज्म का एक एस्पेक्ट जो प्रोफेसर झा ने रेफर टू किया कि टुडे आई शैल नॉट बी कंफर्टेबल पब्लिशिंग एन आर्टिकल और दिस थिंग, और दूसरी बात ये कि आई गॉट अ मैसेज अराउंड 2 and 3 hours before this program started that is it true that Chinese have funded some of the journalists and that is why probably they have been arrested. आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर? अरुण जी, मैं भी लाइन में हूँ। भास्कर सर आपको अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट करना होगा सर भास्कर। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। यस, ये देखिए आशुतोष जी, मैं ही लाइन में हूँ। जी हाँ सुन सर, पा जी रहे हाँ हो? सर। हाँ भास्कर सर, हम सुन पा रहे हैं हम आपको। लोग? प्लीज, यस हम सुन पा रहे हैं। ये जो ठीक है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया वो या चाइना की फंडिंग वर्क के बारे में, और तो सॉरी, ये अगर 2011-12 को याद करिए, तो उस समय भी जब 2G स्कैम हुआ था, फिर जिंदल का ये हुआ था और कई पत्रकारों वगैरह जेल भी गए थे। तो ये हम हर 10 साल बाद कुछ इसी तरह की चर्चा करते रहे, क्योंकि हम इसका जो सिम्टम है उसका इलाज नहीं कर पाते हैं कि सिम्टम कहाँ गड़बड़ी कहाँ पर हुई थी। तो 10-12 साल पहले भी हम ये कर रहे थे, कोई इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे पत्रकारों को जेल भेजा गया। और तो एक तो ये बात समझने की है कि पत्रकारों को किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटी नहीं प्रदान की गई है कि वो बाकी लोगों से ऊपर है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कुछ करते हैं तो जेल नहीं जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडिंग कहाँ से मिलती है कहाँ नहीं, ये टोटली उनके इसके विवेक पर निर्भर करता है कि किस फंडिंग का वो किस तरह उपयोग करें और कैसे। लेकिन उनको ये फिर इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। असल में होता क्या है कि जो हमने एक सोशल स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी का बहुत कोई खाना नहीं है हमारे, वो चाहे पत्रकार हो चाहे फिर दूसरे प्रशासक हो, नेता हो, वगैरह वगैरह जो भी है। तो अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ से ये खत्म होती जा रही है कि कौन इसके लिए कौन जिम्मेवार था, वो खोजा नहीं गया, जिम्मेवार था उसको सजा नहीं दी गई। तो ये बातें चलती रहेंगी। इसमें ये गलत है या सही है, लेकिन हमने एक ऐसा पत्रकारिता के लिए ऐसा माहौल बनाया है यहाँ पर कि ये सब चीजें हमको लगता है कि हमारे सामने आती रहेंगी। और जैसे जैसे पत्रकारिता का दायरा बड़ा होगा, जैसे अभी आप इसमें सोशल मीडिया मिल गया है, फिर डिजिटल मीडिया मिल गया है, या फिर बहुत सारा एक्सेस हो गया है हमको दूसरे सारे मीडिया का जो पहले नहीं था, जैसे CNN का या मान लीजिए BBC का या फॉक्स न्यूज का वगैरह वगैरह। तो आमतौर पर और मीडिया से जो शिकायत भारत में लोगों को है, वही शिकायत यही शिकायत अमेरिका में है, यही शिकायत फिर साउथ कोरिया में है। कहीं भी मीडिया जो है वो अपना काम आपको याद होगा साउथ कोरिया में एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें स्कूल के करीब 200 बच्चे मारे गए थे शिप में, और उसमें मीडिया ने वो खबर चलाई ही नहीं कि वो मारे गए। मीडिया में खबर यही चलती रही कि वो बच गए, या क्योंकि वो उसी पर डिपेंड कर रहे थे कि जो राष्ट्रपति के यहाँ से जो फीड हमको आता है उसी पर हम काम करते रहेंगे, और यही उनको अनुमति थी कि इसी पर काम करिए। तो ये हमको लगता है कि ये गिरावट डॉक्टर साहब सब जगह है, ये केवल भारत की बात नहीं है। लेकिन इसके बीच से जो रास्ता निकलना चाहिए ना, हमको लगता है कि हम लोग रास्ता निकालने में थोड़ी सी मतलब ये नहीं चाहते हैं कि अपने को इसमें झोंके हम,
क्योंकि जब सरकार ने देखा कि ये तो विज्ञापन से चलने वाली गाड़ी है, तो वो सरकार ही सबसे बड़ी विज्ञापन दाता बनी, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। अब सरकारें इतनी बड़ी विज्ञापन दाता बन गई, तो पहले ये होता था कि विज्ञापन सरकारों के बहुत कम आते थे। आमतौर पर जो अखबार थे वो कॉर्पोरेट्स के विज्ञापन पर निर्भर करते थे। सरकारों के विज्ञापन मतलब वो सैटरडे को सैटरडे यूपीएससी का विज्ञापन आता था, वैकेंसी, तो वो तो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह छापते भी नहीं थे, वो बहुत लोकल अखबार में कहीं छपता था तो छपता था। तो वो सरकारों के विज्ञापन पर कभी निर्भर नहीं करते थे। अब सरकारों के विज्ञापन पर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई, और जैसे जैसे फिर मीडिया का विस्तार हो रहा है, तो वैसे वैसे फिर ये पैसे की जरूरत हो रही है। ये सवाल गांधी जी के सामने भी था जब वो पत्र निकाल रहे थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूं कि शराब के प्रचार वगैरह अखबारों में छपते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गांधी जी ने कोई रास्ता इसका निकाला नहीं कि अगर विज्ञापन से पैसे नहीं आएंगे तो फिर आएंगे कहाँ से सरकार। और जब ये नहीं निकाला गया तो फिर ये हो गया कि पैसे का कोई स्रोत ऐसा नहीं था जो इसमें नहीं आ सकता था। ये मना नहीं किया गया कि यहाँ से पैसा नहीं आ सकता है, वहां से नहीं आ सकता है। तो इसीलिए जो कोई भी जो कुछ नहीं कर सकता है, पैसा है तो अखबार निकाल सकता है, उसको छूट है। कोई भी जो और आमतौर पर यही देखिएगा कि बहुत सारे रीजन में, जैसे हमारे यहाँ है या तो जितने बिल्डर हैं, ये हैं वो हैं, वही सब चैनल वगैरह के मालिक हैं, चैनल चलाते हैं। और फिर इस तरह से जब होगा तब चीजें, ये दिक्कत आएगी। क्योंकि हमको याद है कि 1980 में यूपी ने एक सर्वे कराया कि आप ये जरा सा अखबारों का सर्वे करिए कि ये जो हम विज्ञापन, वो जो डायरेक्टरेट से जो विज्ञापन मिलते हैं, तो अखबार वो करते क्या है, माने किस तरह जो हम पैसा देते हैं वो उसका सही उपयोग करते हैं कि नहीं करते, वगैरह वगैरह जो भी। तो उसमें दो उदाहरण सामने आए। एक मेरठ का एक अखबार था जो एक और उर्दू में निकल रहा था, उसके दूसरी ओर हिंदी था, एक ही पेज पर। एक और अखबार था जिसको अनुमति मिली थी, तो उसका कागज जब डायरेक्टरेट से निकाला गया तो उसमें मालिक की हस्ताक्षर की जगह अंगूठे का निशान था। तो उन्होंने उस समय ये संभावना जताई थी कि इससे और कुछ तो नहीं होता है कि ऐसे मालिक और ऐसे संपादक जब होते हैं तो ये हो जाता है कि जो खोटे सिक्के का चलन बढ़ रहा है तो खरे सिक्के को बाहर निकाल देंगे। तो ये सब चीजें हुई। मैं सचमुच नहीं जानता हूं कि इसका, क्योंकि जो हम लोगों ने पत्रकारिता की अब तक, जो पिछले समय तक जो पत्रकारिता, उसमें कहीं भी हम लोग को, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई भी अखबार तो पैसे वाला ही निकालता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन हम लोग को बाई चांस हम लोग को ये नहीं झेलना पड़ा कि ये सब चीजें हैं। बहुत एंड में बहुत चीजें आई थी, उसमें शुरुआत हुई थी थोड़ी सी। लेकिन इस समय सचमुच, मतलब इस समय अगर हम रहते तो कैसे करते, क्या करते, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए सोचता हूँ कि अच्छा है कि मैं नहीं हूँ। लेकिन सवाल है कि फिर इसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी किस पे है? मतलब हम और आप, या यहाँ जैसे जो भी लोग हैं, जो लोग फिर समाधान नहीं निकालेंगे तो निकालेगा कौन? क्योंकि 11-12 में ठीक ऐसे ही चर्चा हो रही थी कि बहुत ज्यादा दबाव है मीडिया पर। उस समय भी संपादक जेल गए थे, उस समय भी कई तरह के घोटाले हुए सामने आए थे। तो हाँ, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जी, डॉक्टर राज चंद्र झा, आपकी बात के उसी सिलसिले में पूछना ने एक अपनी छोटी सी टिप्पणी अच्छा कि इमरजेंसी के दरमियान भी, सर आपको याद होगा जी जी कि प्रेस पे कई सारे अंकुश लगाए गए थे समाधान की, जब हाँ आप हाँ बात कर रहे थे। मुझे वो दुष्यंत की पंक्तियां याद हैं कि मत कहो हो, मत हाँ हाँ कहो हो, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।
For those who are not very proficient in Hindi, its simple translation is, don't say that the sky is overcast. It may be construed as a criticism of some individual. ये आज भी हो रहा, दिस इज हैपनिंग इवन टुडे, लेकिन रास्ता सर निकला था आंदोलन के, जन आंदोलन के माध्यम से रास्ता निकला था। प्रेस सेंसरशिप खत्म हुई, उसके बाद नई सरकार आई, नए कानून बने, आज के दिन इमरजेंसी घोषित करना कानूनन बड़ा कठिन होगा किसी भी सरकार के। रास्ता वही निकलेगा, जन भागीदारी से। ये आपको याद होगा कि उस समय भी ये लाल कृष्ण आडवाणी की ये लाइन बड़ी फेमस हुई थी कि पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया, वो लेट गए। ये आडवाणी जी का था। तो आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल लेट गए। तो आप देखिए कि बाद में जो और एक संपादक ऐसे थे जो मिसेस गांधी के पास वो बुके लेके गए थे, उन्होंने बधाई दी थी इमरजेंसी लगाने पे, और ये कहा था कि देखिए इंडिया के लोग अभी इस लायक नहीं हुए हैं कि डेमोक्रेसी को एंजॉय कर सके या डेमोक्रेसी के अधिकार समझ सके। तो आपने अच्छा किया कि लगा दिया। बहुत लोग खुश भी थे कि चलिए इमरजेंसी लग गई, ट्रेनें समय पे आ रही हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बातें होती रहती थी। ये वही भावना थी कि इससे अच्छे तो अंग्रेजी थे जो आप शासन चला रहे हैं, उनके काम समय में अच्छा काम होता था, वगैरह वगैरह। तो आप ये लेटने की प्रवृत्ति जो थी ना डॉक्टर साहब, वो गई नहीं। और बाद में लोगों ने समझा कि लेटना ही एक ऐसी विधा है जिसमें हम अपना स्पाइन सीधा रख सकते। ठीक है, आपको जरूरत थी स्पाइन सीधा रखने, तो आपने कहा ये तो बड़ा आसान है, मैं लेट जाऊंगा तो स्पाइन सीधी रहेगी मेरी। तो ये थोड़ी बेईमानी हुई उस समय। और आपको ये इमरजेंसी में एक जो आप लोगों को इधर वो शायद नहीं दिखी होगी, इमरजेंसी में एक लड़का था अनंत पटवर्धन बम्बई का, वो अच्युत पटवर्धन के बेटे थे। तो वो लड़का आया था क्योंकि उस समय मैं बाय चांस गोरखपुर में था। तो गोरखपुर में एक संस्था में गया था, तो वहां लोग पूछते थे कि आपने जेपी को देखा है कि नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा देखा है, तो मैं भी आऊंगा पटना देखने के लिए। तो ये जेपी को लेकर ये उत्साह था। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात क्या है कि आंदोलनों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आंदोलन से जो लोग भी निकले हैं, चाहे आपके यहाँ निकले हो, चाहे अरब स्प्रिंग से निकले, वो बात घूम फिर के फिर वही आ जाती है। आंदोलन तो अभी अच्छा, अब सरकारों की कोशिश ये है कि कोई आंदोलन जन्म ही नहीं लेने दिया जाए, और अगर जन्म लेने दिया है तो उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाए। तो आंदोलन अब आप चाहते हैं खड़ा करना, खड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंदोलन के जो परिणाम आए वो उतने उत्साहजनक नहीं रहे कि हम डॉक्टर साहब कहें कि हम फिर से आंदोलन करें। ये जो भी अब अभी की दुनिया में या जो भी सामने आ रहा है, तो आंदोलन से जो प्रोडक्ट निकले वो कहीं से भी ऐसे उत्साहजनक नहीं उसके परिणाम आए कि हम कहें कि ठीक है उस समय रास्ता निकाल लिया हमने, वो अलग बात है। लेकिन हमको अब आंदोलनों पर बहुत विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं जो बात कहना चाहता था कि वास्तव में एक जो सोशल कैपिटल होता है हमारा, सोशल कैपिटल का एक अगर स्थिरांक ले लीजिए, तो सोशल कैपिटल का मतलब है कि आपके लोग मोरली कितना स्ट्रांग, ये सोसाइटी जो आपकी है उसकी मोरल स्ट्रेंथ क्या है। तो वो उसमें बहुत बड़ी कमी दिखती है हमको, और वो नहीं होने से ये परेशानी आती जाएगी, हमको लगता है। Kisle, actually, I invited Kisle to react. So let Kisle finish, and then Shirish sir can take. Arun sir, yeah, Arun. Shirish sir, I wanted to say that Professor Shirish Chaudhary wanted to say something. So Okay. So Kisle will come after Professor Shirish. Kisle ji first. Okay, Kisle. If Kisle ji is ready, then you know. Kisle is. I think Kisle Chaudhary sir can go ahead, Yes, and then yes. Mr. Kisle can take over later on. Yes. Let us check with Kisle ji if he is ready, and if he is willing, he can go ahead. Otherwise, I have
a few things to share. Please go ahead, sir. So Ashutosh ji, okay. Yes, sir. You please go Right. ahead. Let me also get personal. And I must congratulate you, Arun ji, and Ashutosh ji, asking Dr. Raj to talk about his experiences. You see, somewhere, in the abstract world of knowledge, man-made boundaries disappear. Man-made boundaries have no real existence there. So all that we call arts, all that we call sciences, all that we call by any other name are our own artificial constructs. Knowledge as a body does not exist in compartments. And you rarely get to see that. I have known Dr. Raj since he was an undergraduate student at Ranchi. He happens to be a good friend of a very close and dear relative. And so I was those days, I used to teach at Ranchi University those days, a lecturer. And these young people would be kind enough to visit us now and then. And conversation with Dr. Raj was always intellectually stimulating. That's all I can say. Now, the two things that he mentioned, one was if it is clairvoyance, or para something. Please allow me to quote Shakespeare. For those of us who have read Hamlet, there is a dispute between Horatio, a good friend of Hamlet, and Prince Hamlet. Horatio says there is no ghost, and Prince Hamlet says there may be. In the end, through Hamlet, Shakespeare says, and Hamlet says, there is greater variety in the world than Horatio, our sciences can or do understand. So it is, I'm inclined to believe that we don't know enough. And actually, I will quote authorities that as far as mind is concerned, we know only as much today as we knew about physics in the days of Galileo. So what Dr. Raj has said is really very stimulating and requires some discussion by itself. I am a student of languages, and one of the frontier areas of this subject is neurolinguistics, which leads us to examine why people lose language when they have brain strokes and how it is recovered. And please pardon me for saying that. There are a lot of physicians here and surgeons here. We are inclined to believe that all that we know about brain today is hardly a little more than or a little less than science fiction. There are many questions which cannot be answered by the kind of conventional anatomy of brain or physiology of brain that we tend to talk about. So this is a subject where much more research, much more pondering, and much more discussion is required. I'm grateful that Dr. Raj has the humility to say that he does not have a final conclusive remark on this subject. Coming to journalism, I have one foot in journalism. There is hardly a major newspaper in India, minus Indian Express, for which I have not written. And I have also written for newspapers abroad. I also have the experience of working in a news agency as a sub-editor and a leading newspaper, a daily English newspaper, as a reporter. I'll say just one thing. No section of the society can be an island by itself. If you have a country where Supreme Court judges, where professors, doctors, where everyone is out to make money, where Supreme Court judge
has to resign, otherwise face impeachment, where professors routinely teach at home but not at college, where doctors, where lawyers, where everyone who can, practically everyone who can, there may be exceptions as everywhere else, who is out to do only one thing, either quote unquote rise in career or quote unquote make some more money. Therefore, in such a situation, it will be totally utopian for us to expect that journalists alone will be above the pack, above the rest of the world. But, and here I take hope in anthropology or the history of mankind, human destiny or the destiny of communities moves through cycles. You know, India brought up its best and achieved its freedom in almost under 3 decades. In 1922, when Gandhi asked for complete freedom, or it was difficult to believe that in under 25 years India will be free. But the way India came together, its scientists, its businessmen, its professors, its doctors, its engineers, everyone who could, including a very humble person in villages. But then, from the crest, you have got to come to the trough. So we are just now experiencing a trough. All we can do is, in my opinion, not even Jana Andolan, because that's a very difficult thing to start, do. We will wait for a messiah or a prophet. But the least we can do is, and as a British novelist says, cultivate our own garden, and we spread this movement. Let us ask another doctor, let us ask another professor, let us ask another army officer, let us ask another bureaucrat to do what they ought to do to the best of their conscience. Until then, perhaps we have to wait for Sri Krishna to, rebuild the world. But once again, I really don't know. I've shared with you what I felt. It might or might not be correct. Thank you, Arunji. Thank you, Ashutoshji. Thank you, sir. Kisle, sir, would you like to talk? Kisle ji, you are muted in case you are trying to speak. Yes, now you are unmuted. You can talk. हाँ साहब, सबको नमस्कार। और मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है। अब तक तो मैं सुन रहा था और कई पत्रकारों ने अपना अनुभव जो सुनाया वो बहुत ही अद्भुत था बेशक। हाँ, एक चीज जो मैं छोटी सी बात जो कहना चाहता हूँ कि आज जो हो रहा है इसके बारे में भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। हम खासकर जो यहाँ बुद्धिजीवी लोग उपलब्ध हैं, कई लोगों की बातें हमने सुनी और हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो कि यह पहलू ठीक है। हमारे पास में डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये बड़े ग्रुप, बहुत अच्छा ग्रुप हमारे पास है और इसमें ऐसे मसलों पर बातचीत होनी चाहिए। हमें लगता है कि ये ताज़ा घटनाएं जो हैं ये बहुत मायने रखती हैं। और अभी एक हमारे एक सीनियर हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमास पर जो बातें हो रही है उसके बारे में आम आदमी क्यों नहीं जानना चाहता है, क्यों नहीं जानना चाहेगा, जबकि हमास फिलिस्तीन में बच्चा भी जान गया है इंडिया के बारे में, इंडिया की हरकतों के बारे में या इंडिया की उपलब्धियों के, खुशियों के बारे में समझता है। हम इंडियंस जो आम आदमी कट जाता है। पहले तो याद होगा डॉक्टर राज यहाँ है, विजय भास्कर साहब भी हैं यहाँ पर, कि कैसे विदेश का जो पन्ना होता था अखबारों का वो लगभग अनदेखा ही छोड़कर लोग उठ जाया करते थे अपने घरों में। अब जाकर थोड़ी रुचि बढ़ी है, लेकिन इसकी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी दिनचर्या को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और इस ऐसे हालात में आज देश में पत्रकारिता के बारे में जो पत्रकारिता को लेकर जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करनी चाहिए।
ठीक है, चूंकि मैं पत्रकार हूं, मैं तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें पत्रकारिता पर बोलता रहूंगा, लेकिन हम लोग इस पर आगे बढ़ें। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो समझ सकते हैं, कुछ नया डायमेंशंस दे सकते हैं, वो जो अक्सर दे दिया करते हैं। हमें लगता है कि बुद्धिजीवियों से ही ये चीजें निकल कर आती हैं कि क्या कुछ नया किया जाए, क्या सुधार किया जाए। सुधार के लिए कई तकनीकी की व्यवस्था हो सकती है, बेहतर उपाय हो सकते हैं। तो हमें लगता है इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो बाकी तो सब हमारे डॉक्टर राज चंद्र झा बहुत पुराने हमसे सीनियर रहे हैं पत्रकारिता में। तो वो हमारे न्यूज एडिटर थे प्रभात खबर में, और विजय भास्कर जी तो हमारे संपादक ही थे। विजय भास्कर जी के बारे में भी बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दिनेश जुयाल जी हैं, वह भी न्यूज एडिटर थे, और दिनेश जुयाल जी के साथ में काफी दिनों तक काम करने का मौका मिला मुझे, ये सौभाग्य भी मुझे मिला है। बहुत अच्छा लगा। और अरुण जी से तो मैं इसलिए मोटिवेटेड हूँ कि इनका जो एक उत्साह होता है वो मेरे लिए, एक जो लाइवली इनका जो एक प्रेजेंटेशन होता है हर टॉपिक पे, वो अद्भुत होता है साहब। आप में वाकई, आप अगर सो भी रहे होंगे तो आप खिलखिला कर उठ बैठेंगे, ऐसा लगता है। तो हमारे सभी के सभी हमारे अग्रजन है, हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, लंबी दाढ़ी और उजली दाढ़ी पर मत जाइएगा, है ना। वो तो मैंने शुरू से ही रखा है, और वो कभी बढ़ जाती है, कभी छोटी हो जाती है, और उम्र के मुताबिक उजली भी हो गई है। तो इतना ही कहना था साहब, बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू किसलर। दिनेश जुयाल साहब ने हाथ उठाया है। दिनेश जुयाल साहब। डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास टाइम है या टाइम खत्म हो गया? टाइम है हमारे पास, टाइम हम लोग रख रहे हैं। दिनेश साहब, 25-26 मिनट आपका टाइम है बहुत अभी। शुक्रिया विद्वानों के इस ग्रुप में। ये तो ऋषिकुल है, आप लोग अपने अपने मंत्र सिद्ध ऋषि मुनि है, और मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ। तो बहरहाल जो विषय आप लोगों ने शुरू किया था, पहले एक और धन्यवाद कि आज 36 साल बाद विजय भाई के दर्शन हुए, किसले के दर्शन हुए, राज जी से, डॉक्टर राज से हमारी बातचीत होती रहती है। तो ये मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, बातचीत में बीच बीच में मीडिया पर अरुण जी की जिज्ञासा थी कि मीडिया के आज के हालात क्यों हैं ऐसे। विजय भाई से पूछा था, विजय भाई ने उसका एक समुचित जवाब भी दिया था, बात रखी थी। मुझे लगता है कि इस विषय पर थोड़ा बेहतर और डिटेल में अगर हम बात हमें करनी चाहिए। ये विषय ऐसा है कि हम मीडिया समाज का रिफ्लेक्शन है, क्या कुछ हो रहा है ये मीडिया में दिख रहा है। आज हम मीडिया को मीडिया से लड़ते हुए देख रहे हैं, ये क्यों है? ये एक चिंता का विषय है। ये चिंता आप लोगों ने निकाली है, तो थोड़ा सा जो मैं समझ पा रहा हूँ, आजकल मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ थोड़ा बहुत, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज को, देखिए दुनिया को चला कौन रहा है? आपको, हमको, इस देश को, समाज को। दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको पावर चाहिए, पावर हंग्री पीपल। दूसरा है मनी मेकर, जिनको पैसा बनाना है। पूरी दुनिया उनका खेल है। और आज जो मीडिया की हालत है वो उसी खेल का नतीजा है। इस खेल के नियम गड़बड़ा गए हैं, फॉल हो रहा है जगह जगह। तो उसकी वजह से ये चीजें, आज जो स्थितियां आपने कहा कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया, उसके जवाब में वॉशिंगटन पोस्ट ने किया, तो ये जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे ये दो फोर्सेस हैं। क्यों जेफ बेजोस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के बाद, एंटरटेनमेंट के बाद सीधे वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लेते थे? क्यों अडानी जी ये एनडीटीवी को खरीदते हैं? क्यों नंबर 1 एलन मस्क जो है वो ट्विटर एक्स को खरीद लेते हैं? क्या है पूरी समीकरण? क्या है ये? शुरू से यही समीकरण रहा है मीडिया का। मैं, डॉक्टर साहब, विजय भाई किसने एक अखबार में काम करते थे रांची में, 2-3 साल भटकने के बाद मैं वहां गया था। उस अखबार की भूमिका कैसे, मैं तो गया कि वहाँ विजय भाई हैं, वहाँ हमारे जो संपादक थे SN विनोद जी बहुत प्रखर संपादक हैं, सुरेश सिन्हा जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम सीखेंगे और सीखेंगे। लेकिन वहां जाके हमें पता चला कि अखबार बना कैसे एक अखबार खुला है। ज्ञान रंजन जी थे, कांग्रेस के लीडर थे, शायद दूसरे सज्जन चंद्रबाबू जी थे, कौन थे, जिन लोगों ने फंड इकट्ठा किया था
जाहिर तौर पर उनका कुछ मकसद था उस अखबार को निकालने का। ये भी था कि साहब उसमें तो सूर्यदेव सिंह भी हैं पीछे, ये भी चर्चा बाद में आई। तो मीडिया मंतव्य से निकाला जाता है, दोनों तरह के लोग होते हैं मीडिया के पीछे, और आज जो मीडिया खिलौना बना है उसके पीछे भी दोनों तरह के लोग हैं। सत्ता और बिजनेस, इसमें एक बैलेंस हुआ करता था। जिसके पास सत्ता है उसको बिजनेस को संतुलित करना होता था। आज कहना मुश्किल हो रहा है कि ये चर्चा है, आज के दिनों की चर्चा है कि ये बिजनेस वाला सत्ता को चला रहा है कि सत्ता वाला बिजनेस को चला रहा है। हम उस दौर में हैं। जो ये घटना हुई है, दिल्ली वाली घटना, क्यों क्या है इसके पीछे? क्या सवालात पूछे गए पत्रकारों से जिनको पकड़ा गया? 50 लोग थे, उसमें 9 लोगों को तो मैं जानता हूं अच्छे जर्नलिस्ट थे, पूरा कैरियर बेदाग। उनसे सवाल क्या पूछा गया? क्या आपने किसान आंदोलन कवर किया? क्या आपने दिल्ली के दंगे कवर किए? क्या आपने शाहीन बाग कवर किया? सीए एनआरसी के बारे में क्या था? व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है? मतलब ये है और कि भाई ये चीजें एक डिसिप्लिन में ही कवर की जानी चाहिए। तो ये कौन सा पैटर्न है पत्रकारिता का? हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, जैसे कि देश में, दुनिया में और भी डेमोक्रेसीज हैं। कायदे से अगर हम कहेंगे हम कौन सा पैटर्न चला रहे हैं पत्रकारिता का, तो कहेंगे कि लिबर्टेरियन थ्योरी के हिसाब से हमारा चल रहा है। हमारा जो है जो राजा है, जो हुक्मरान है, वो लिबरल हैं। वो जनता की बात सुनते हैं, फीडबैक देते हैं, उनके सामने रोना गुनाह नहीं है, वो इलाज करते हैं रोने वाले का। उनको अपनी आलोचनाओं से भी परहेज नहीं है, क्योंकि उन्हें एक बेहतर समाज देना है, उनके ऊपर समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है। ये इस पैटर्न, डेमोक्रेटिक पैटर्न के ये तरीके हैं जो जिसमें अखबार को चलना चाहिए। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि तमाम मुल्कों में मीडिया के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जैसे गरुण जी ने एक जगह पॉइंट आउट किया था कि जो मीडिया का हमारा भारत का हालत क्या है। रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्री, उनके हिसाब जो 180 देशों की सूची में हम 161वें स्थान पर क्यों पहुंच जाते हैं? कहीं कुछ गड़बड़ है। सत्ता और बिजनेस, इन दोनों का गठजोड़। बिजनेस, मीडिया इज अ बिजनेस, मीडिया एक व्यापार कारोबार हो गया है। गांधी जी का मीडिया खत्म हो गया। गांधी जी ने सिद्धांत रखा था कि मैं अपने अखबार में एक भी विज्ञापन नहीं छापूंगा, क्योंकि जिस दिन एक भी विज्ञापन छप जाएगा उस दिन मेरा मीडिया खत्म हो जाएगा, उस दिन इस मीडिया की वैल्यू खत्म हो जाएगी। वो अप्लीकेबल नहीं है आज की डेट में, मानता हूं, लेकिन फिर भी जिस दौर में हम लोग जिस दौर की डॉक्टर झा जिक्र कर रहे थे, उस दौर में बहुत संतुलन था। मुझे 6 साल हो गए रिटायर हुए, उसके पहले का दौर भी इतना ज्यादा खराब नहीं था। वो खराब हो रहा था उन दिनों, लेकिन हमने उस संतुलन को देखा है कि किस तरह मीडिया एक संतुलित रूप में चल रहा था। आज मीडिया 2 खेमों में है, एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और एक जो डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया के अंदर हमें गुस्से से भरे हुए पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, वही न्यूज क्लिक वाले लोग जैसे लोग बात, ये वही लोग हैं जो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, और ये कैसे वहां शिफ्ट हुए, उनकी भी एक एक की कहानियां हैं। एक एक की कहानी वहां शिफ्ट होने के पीछे ऐसी कहानियां हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये कहानियां हुई हैं। एक जर्नलिस्ट को इसलिए अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के डिजिटल में जाना पड़ता है कि उसने एक बाबा की, जो बिजनेसमैन भी है, उससे सवाल पूछ लिया। अब एक बाबा से सवाल पूछने पर यह हाल होता है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होता है? अब एक चीज और गौर करने की, मीडिया हाउस चल कैसे रहे? ये क्राइसिस जो, अगर हम कह रहे हैं कि मीडिया की आवाज दब गई है, या मीडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, मुख्य धारा का मीडिया, हालांकि मुझे लगता है उसके लिए कुछ मेन स्ट्रीम की जगह कोई नया शब्द कोइन करना पड़ेगा। वो जो मीडिया है, वो मीडिया क्यों मजबूर हुआ है? मैंने बच्चों को एक इंडस्ट्रियल टूर कराया था एक अखबार के दफ्तर में। तो मैंने बच्चों के सामने ही प्रोडक्शन हेड से पूछा, मैंने कहा ये बताओ, ये अखबार आपका, एक अखबार कितने पैसे का आता है? इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है टोटल? उन्होंने कहा साहब ये 22 रुपए पड़ती है हमें, बेचते हैं आप 5 रुपए का।
बाकी पैसा कहां से आता है? विज्ञापन से आता है। विज्ञापन कौन देता है? कौन विज्ञापन देता है? क्यों देता है? एक परसुएशन थियरी पर दोनों काम करते हैं, बोथ पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन। उनकी अपनी अपनी परसुएशन थियरी है जिस पर वो काम करते हैं। उनको परसुएट करना है। देन इंडिया जैसे देश में जहां 140 करोड़ का मुल्क है, दुनिया की नजर इस मार्केट पे है, तो यहाँ के जो लोग जो लाभार्थी हैं, जिनको लाभ देना है, उनकी नजर तो होगी। बिजनेसमैन अपने एक टूथपेस्ट को, चाहे 2 कौड़ी का नहीं है, हीरा बना के बेचना चाहता है। एक कॉलेज मालिक जिसके यहाँ बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, पढ़ाई नहीं जा रहा, वो अपने कॉलेज को अव्वल दिखाना चाहता है। तमाम एजुकेशन सेक्टर हो, एफएमसीजी, हर सेक्टर से, जो भी, इवन मेडिकल। अब तो मेडिकल इंडस्ट्री इतनी हो गई कि मैं तो आईएमए से लड़ा हूं 2-3 जगह, और तो वो इतनी मेडिकल फ्रेटर्निटी भी जो कर रही है, गजब ही कर रही है कई जगहों पर। बरेली में मेडिकल है, देहरादून में मेडिकल है। तो ये सब लोग मीडिया को पैसा क्यों दे रहे हैं? कुछ तो कुछ झूठ कहने के लिए भी पैसे मिलते हैं, गलत प्रोजेक्शन के लिए पैसे देते हैं। नेता लोग, एक गली का चुटभैया नेता अखबार में छपता है, बोलने की उसका सलीका नहीं है, लेकिन अखबार में उसका प्रोजेक्शन देखिए। बड़े लोगों की तो बात ही क्या कहें। मुझे डॉक्टर साहब, जब हम रांची में थे उस समय पॉलिटिकल विज्ञापन नहीं छपते थे। 84-87 के बीच पॉलिटिकल विज्ञापन नहीं छपते थे। नागपुर का एक अखबार है नवभारत, उन्होंने माहेश्वरी फैमिली का, उन्होंने पहली बार विज्ञापन छापना शुरू किया पॉलिटिकल लीडर्स का। नेताजी आ रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं, रैली हो रही है, यहां से कहानी शुरू हुई। और आज पूरे अखबार पॉलिटिकल विज्ञापनों से छपे हुए हैं, छाए हुए हैं। क्या है ये? पैसा कौन दे रहा है? पैसा मीडिया को चलाने के लिए पैसा दे रहा है पॉलिटिशियन। मीडिया को चलाने के लिए पैसा दे रहा है बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन। जैसे मैंने आपको जेफ बेजोस और एलन मस्क का दिया उदाहरण, अडानी जी का दिया। अंबानी जी तो 29 प्लेटफॉर्म खरीदे बैठे हैं, तमाम जगह स्टेक है उनका, तमाम लोग। तो बात यह है कि ये जो बैलेंस कहीं गड़बड़ा गया है। जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो अपने खेल कर रहे हैं, सत्ता, प्रतिष्ठान और बिजनेस की जो एथिक्स हैं वो खराब हो गए हैं। सत्ता में जो लोग हैं जिनको कि एक बेहतर समाज बनाना है, वो अपने बेसिक जिम्मेदारी से हट करके दे वांट पावर। हमारे नेता को बुश जैसा बाइडेन जैसा व्यवस्थाएं चाहिए। हम कौन से मुल्क हैं? अभी हम किस स्थिति में हैं? ये मुल्क, जिस मुल्क में हम 80 करोड़ लोगों को 140 में से मुफ्त राशन बांट रहे हैं, उस देश का आर्थिक पैमाने पर हम क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन देश की हकीकत क्या है हम समझ रहे हैं अच्छी तरह से। इस देश के हुक्मरान, अगर आप, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, मेरे से छोटे थे कॉलेज में, और आज वो बहुत ही अरबपति खरबपति लोग बाग हो गए हैं, जबकि उनकी कॉलेज की फीस भरने का ठिकाना नहीं था। दिस इज व्हाट पॉलिटिशियंस आर डूइंग। बिजनेसमैन की कहानी आपके सामने है कि एक बिजनेसमैन ये नीचे से यहां पहुंच जाता है, 10वें 11वें अचानक ऐसे पहुंच जाता है। ये सवालात उठा रहे हैं। अब क्या है कि जो 2 तरह के लोग हो गए हैं, जिनने सवाल नहीं पूछने हैं, और ये को हो गए जो सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की 2022 की रिपोर्ट है कि साहब हमारे यहाँ से 23,000 मिलेनियर्स 14 से 18 के बीच भाग गए एक तरफा टिकट लेकर के। 2020 में अकेले 5,000 चले गए। 2022 में 8,000 तैयार बैठे। ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट पे जो मीडिया है, जो से दूसरे दर्जे का मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, उसने सवाल उठाए, डिफेंस डील पे सवाल उठाए। ये लोग नेताओं की योग्यता पर भी कई बार सवाल उठा लेते हैं, उनके प्रेजेंटेशन पे सवाल उठाते हैं, उनके जो इलेक्शन के जो नॉर्म्स बने हुए वो नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, उन पे करते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे लगता है कि जितने भी धर्म ग्रंथ बने हुए हैं जो हमको संस्कारित होने की प्रेरणा देते हैं, उन धर्म ग्रंथों को मैं किनारे रख दूं और हिंदुस्तान के संविधान को रखूं सामने, मुझे वो सबसे भारी नजर आता है। इसलिए कि उसमें
वो उसमें व्यवस्था दी गई है, व्यवस्थाएं की गई हैं कि इस हिंदुस्तान में जो आजाद हो रहा है, इसमें इसको कहाँ जाना है, कैसे हमको धीरे धीरे करके अपनी मैन पावर को तैयार करना है, कैसे इस मुल्क को हमको एक विकसित देश बनाना है, ये सारी व्यवस्था उस कॉन्स्टिट्यूशन में। दुर्भाग्य से वो जो बहुत अहम बिंदु है, अभी तक वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पड़े हुए हैं। समय गुजरा है, इसमें संशोधन होने चाहिए। ये बात 1950 की बात है और हम 2023 में हैं। उसमें संशोधन होने चाहिए, पॉजिटिव संशोधन होने चाहिए, लेकिन शायद हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। इन पर सवाल उठाने वाले लोग बात वो हो रहे हैं। तो बहरहाल स्थिति ये जो मीडिया का है, अब ये जो दो लोग मैंने गिनाए, इन दो लोगों ने मीडिया को इस हाल में पहुंचा दिया है कि आज मीडिया से लड़ रहा है। एक का नाम गोदी मीडिया रख दिया गया है, दूसरा बिना गोदी का मीडिया हो गया। बिना गोदी का मीडिया डर के मेन स्ट्रीम से घट करके इसके अंदर घुस गया है, लैपटॉप में और कंप्यूटर के अंदर घुस गया है, मोबाइल में घुस गया है, वहीं जाकर शोर मचा रहा है। लेकिन दोनों फेयर हैं क्या? दूसरा फेयर गेम खेल रहा है? मैं कहूंगा नहीं, वो भी फेयर नहीं है। मैं उनका भी पक्षधर नहीं हूं पूरी तरह से। अभी हम इस मुल्क में रहते हैं, मीडिया की जिम्मेदारी है कि अपने अपने समाज को, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए व्यवस्था पे दबाव डाले। अगर हम वाकई लिबर्टेरियन थियरी पे काम कर रहे हैं, अगर हम एक डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं, लेकिन शायद हम भटक रहे हैं। अगर एक उसका चेहरे को बड़ा बना तो दूसरा वाला इसके चेहरे को बड़ा बना रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बिहार में सेंसस आया, पब्लिश किया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी करने वाले हैं। मेरे मीडिया के बहुत सारे बंधु उसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे बहुत क्रांतिकारी कदम उठा लिया। यानी कि हिंदुस्तान अगर को दो टुकड़ों में बांटा जाए तो उसको कई टुकड़े कर डालो। पर्सनली आई डोंट एग्री। मुझे लगता है कि कुछ नए नैरेटिव्स होने चाहिए, नए इश्यूज होने चाहिए हिंदुस्तान को संभालने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज की जो मीडिया की हालत है वो इन विभिन्न कारणों से, देखिए बड़ा विषय मैं इसको यही समाप्त करना, बड़ी खराब स्थिति है। और व्हाट इज द वे आउट, एक सवाल उठता है कि तरीका क्या है। तो हमारी एक थ्योरी हम पढ़ते हैं कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन थ्योरी। उम्मीद करते हैं कि उस थ्योरी पे कभी अमल होगा। ये अभी हम सुन रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं उनकी टीआरपी लगातार घट रही है और घट रही है। तो फिर देखिए, सच हो या झूठ हो, अच्छा हो या बुरा हो, मनुष्य के शरीर की तरह इनकी भी एक उम्र होती है। कोई भी एक नैरेटिव, उसको भी खत्म होना होता है। तो सब मियादी है, उसको जाना है, कुछ नई चीज आनी है। तो जो नई चीज आज कही गई है, जो हमारे पुस्तकों में जो नई चीज कही गई है, वो एक थ्योरी है कि जब ये बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन इररिलेवेंट हो जाएंगे और छोटे प्लेटफॉर्म पीपुल्स पार्टिसिपेशन से मजबूत होकर के बुलंदी से आगे आएंगे और तब चीजें आएंगी। ये चीजें एकदम, ये करामात एक दिन में नहीं होने वाली, धीरे धीरे होगा। लेकिन हम इस नए जो अवतार है हमारा, जो न्यू मीडिया है, उस न्यू मीडिया में इसके प्रयोग होते हुए देख रहे हैं। एंड आई एम होपफुल कि आएगी एक दिन, सुबह भी आएगी। तो मैं निराश तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, आज का दौर वाकई बहुत ज्यादा परेशान करने वाला दौर है। क्योंकि मैंने 36 साल पूरे फुल टाइम अखबार में दिए हैं, नौकरी की है मैंने अखबार की, सीधे सीधे कहूँ। एक अच्छे जर्नलिस्ट होने का भान तो मुझे इन सालों में से मुश्किल से 6 महीने हो पाया हुआ कि मैं हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ। बाकी साल मैंने नौकरी की है। लेकिन नौकरी भी की है तो भी मैं मीडिया के साथ सोता रहा हूँ सुबह से शाम तक। मेरा इसके अलावा कुछ नहीं था। आज भी मैं उसको, तो मैं कस्टमर हूँ। आप जिनके जो अलग अलग क्षेत्रों के सिद्धहस्त ऋषि मुनि हैं, आप त्रस्त है, आम पब्लिक त्रस्त है। तो इस डिस्कोर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इस पर होनी चाहिए। और अपने हमें तो लगता है कि एक जर्नलिस्ट कहता है कि बोलना चाहिए हमको, और जहां कुछ गलत हो रहा है उस पर बोलने की इतना तो हम कर सकते हैं। मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है, अखबार नहीं देखता हूँ। यहाँ मुझे पास वैसे आ जाते हैं सब कुछ, मेरे पास डिजिटल सारा कुछ आ जाता है। तो ये जो हताशा मीडिया के प्रति हुई है, इससे उबरने का अभी एक हमारी वही है कि भाई वो दौर आएगा कि जब
पीपल पार्टिसिपेशन वाला मीडिया मजबूत होगा। लेकिन फिलहाल वाकई बहुत हालात खराब है। और सर आपने ये चिंता जाहिर की तो मेरा मन हुआ मैं भी अपने मन की भड़ास निकाल दूं, तो बात रख दी। मैंने ज्यादा ले लिया। थैंक यू सो मच। दिनेश साहब, अभी झा जी ने भी एक हाथ उठाया है। जी दादा और विजय सर ने भी हाथ उठाया। हाँ, विजय गलती से विजय निकल गया। एक लाइन विजय साहब के पास मैं आ रहा हूँ। एक लाइन में बताऊंगा, मीडिया का काम या बुद्धिजीवियों का काम पक्ष लेना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यथास्थिति जो है वो तो उजागर करनी है, मीडिया को उजागर करनी है, और जो कथित बुद्धिजीवी हैं उन सवाल को आगे बढ़ाना है। जी। परिवर्तन क्या होगा क्या नहीं होगा वो कर्मण्यवादी रास्ते मा फलेषु कदाचन, उसकी तो हमको चिंता नहीं करनी है जी। लेकिन जब ये सवाल उठता है कि सवाल उठा करके क्या होगा, क्या हम लोग व्हाट्सएप पर या सवाल उठा करके सरकार के उन नियमों को बदल देंगे, तब हमको बड़ा क्षोभ होता है कि सवाल ये कि हम लोग बदलने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, बदलाव हो तो अच्छा है, लेकिन अपने कर्तव्य से हम लोग विमुख हो रहे हैं। ये समझ करके कि ये सवाल उठाएंगे तो ये किसी के पक्ष में है या किसी के विपक्ष में है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, जबकि कोई भी पत्रकार या कोई भी प्लेटफॉर्म सूचनाएं हमें दे रहा है, सिर्फ सूचनाएं दे रहा है, और उस सूचनाओं देने के अवज में अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो ये तो गलत ही है, इसका विरोध होना ही चाहिए। बिना ये समझे हुए इस विरोध करने से क्या होगा, ये मुझे एक बात कहनी थी। विजय साहब अच्छा विजय साहब का एक सवाल मुझे झा जी से भी पूछना है, 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। विजय साहब प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड। विजय भास्कर। हाँ ये अरुण जी अभी जो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो। तो अभी जो किसले ने कहा कि ये हमको भी इसमें फलस्तीन के बारे में या हमास के बारे में जानने का हक है। ये इधर एक परिवर्तन क्या हुआ है कि जैसे हफ्ते भर पहले मैं एक लैटिन फिल्म देख रहा था, उसमें शुरू में आया कि 3 चीजें ढकी नहीं जा सकती, एक सन, एक मून और तीसरा ट्रुथ। ठीक है, सन, मन और ट्रुथ ढके नहीं जा सकते। लेकिन इधर हो क्या रहा है कि जो ट्रुथ है वो एक नहीं रहा। मतलब हम आते हैं कि ये हमारा ट्रुथ है और ये हमारा ट्रुथ है। जैसे मान लीजिए कि हमास के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको अल जजीरा पर जाना, ठीक ना, वो CNN वगैरह नहीं दिखाएंगे। मैंने कई बार इन लोगों का काफी किया है, इन लोगों का ये अल जजीरा का वो आपको जाके मिलेगा CNN पर। जैसे जर्मनी साथ नहीं दे रहा है इजराइल का भी, तो जर्मनी में ये करीब ब्लैकआउट रहा, ये खबर ब्लैकआउट रही। CNN BBC वगैरह ने करीब और रेडियो फ्रांस ने करीब 10 घंटे से 15 घंटे तक का लगातार कवरेज दी। तो ये अब अल जजीरा का ट्रुथ क्या है, CNN का ट्रुथ क्या है, BBC का ट्रुथ क्या है, तो ये दिक्कत हो गई है कि ट्रुथ आजकल बहुत से हो गए और सब लोग कहते हैं कि हमारा ट्रुथ इज ट्रुथ, दूसरे ट्रुथ पे हम भरोसा नहीं करते और उसी के हिसाब से फिर लोगों में भी बंटवारा हो जाता है। तो ये एक दिक्कत हुई है। और इस बीच ट्रुथ निकालने के लिए अगर मेहनत करना पड़े तो एक दिन का ट्रुथ निकालने के लिए आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कि अरे ट्रुथ तो ये मे बी वो कुछ कोई और। तो ये एक दिक्कत हो रही है जिस वजह से आप कह रहे हैं कि सच को सामने लाना है, ये लाना है। तो सच के साथ ये दिक्कत हो रही है कि सच अब एक नहीं है। सच माने जितने प्लेटफॉर्म है, या तो सच डिवाइडेड है, एक है या 2 है या कभी कभी 3 है। कोई डिजिटल मीडिया का सच है, कोई टीवी मीडिया का सच है, कोई का सच है। तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है। थैंक यू सर। विजय भास्कर जी, ये दिक्कत आज की नहीं है, दिक्कत जब से समाज हिंदुस्तान मनुष्य पैदा हुआ है तब से ये दिक्कत है। ये दिक्कत आज की नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, और इसीलिए जो अपने आप को प्रबुद्ध कहते हो सकता है फिर हमने समाधान नहीं किया। तो नहीं, समाधान उसका एक ही है सर, मेरे हिसाब से छोटा सा समाधान है। यहीं पर जो प्रबुद्ध अपने आप को कहते हैं उनकी भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है।
कि प्रबुद्ध व्यक्ति सिर्फ एक सच को नहीं लेता है, वो थीसिस के साथ काउंटर थीसिस, एंटीथीसिस को भी लेता है और दोनों को लेकर के सिंथेसाइज करता है। और इसीलिए जो इसलिए ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, और इस ग्रुप में तो कम से कम होनी ही चाहिए, क्योंकि शायद ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्य या थीसिस और एंटीथीसिस दोनों काम करके कहीं ना कहीं एक सिंथेसिस निकालने की कोशिश करें। वो अगर हम नहीं करते तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसमें कहीं से मुझको कोई उज्र नहीं है, अस्वीकार नहीं। हाँ ये अच्छा झा जी आपसे एक सवाल, लोगों ने कल या परसों काफी डिटेल में बात की थी, वो मेडिकल पर है। आपने एक सूचना दी जो मुझे नहीं मालूम थी कि शायद ये जो नया मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस का सिलेबस शुरू हो रहा है उसमें ज्योतिष और आयुर्वेद है, ज्योतिष भी आ रहे हैं। जरा उस पर कुछ बात बताएंगे आप? तो अरुण सर एक चीज बताना चाहूंगा, 3 मिनट बचे हुए हैं आज के। मैं भी झा जी will be able to finish in that. झा सर, 1 मिनट में सिर्फ बता देता हूँ कि ये नेशनल मेडिकल काउंसिल अभी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जगह में आया है, उसका प्रपोजल है जो 2023 से ही लागू होना था, तो इस बार नहीं लागू हुआ है, शायद अगले बार से लागू होगा। उसमें आयुर्वेद की पढ़ाई जो है वो पार्ट ऑफ एमबीबीएस करिकुलम बनाने का प्रस्ताव, और उसमें आयुर्वेद के एक हिस्से में ज्योतिष को भी प्रपोज किया गया है कि रखा जाए। अभी लेटेस्ट ये है कि दिस हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड दिस ईयर, बट द प्रपोजल स्टिल रिमेन and most likely to be accepted and aggressively promoted by those who are in power. अब इसके अच्छे बुरे के लिए समय नहीं है, आशुतोष जी टोक रहे हैं इसलिए नहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, ये ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? लाइक आईआईटीज में भी दिस इज कंपलसरी। ठीक है, आशुतोष। बस सर बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धन हुआ। मुझे सिर्फ एक बात याद आती है जो मैंने अपने डोमेन में सीखा था, एक टर्म जो कि हमारे इतने विद्वान जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे सबको पता होगा। एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक टर्म है जो कि यूज होता है मिलिट्री वर्ल्ड में। मतलब आप विदाउट फायरिंग अ बुलेट यू कैन डिफीट योर एनिमी एंड दैट इज थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन। अब मैं ये सारा वार्तालाप सुनने के बाद मेरे दिमाग में यही बात आ रही है कि पॉलिटिकल डोमेन में या सिविल डोमेन में भी ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ गया है, जहाँ पे आप एक दूसरे के ऊपर, वो प्रेमचंद की भाषा में कहूँ तो उछल के वार कर रहे हैं, उछल पर एक दूसरे पे आघात कर रहे हैं। तो यही है उसमें, मतलब सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हम सबको समझना है। और हमें कंफ्यूज हो गया जी, सच कंफ्यूज हो गया। जी हाँ बिल्कुल। और हमें अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन सब चीजों को समझना है। किसी तरह से मैं सम अप करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है। आप लोगों ने इतना बढ़िया कहा कि मैं सम अप नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सोचा समाप्त करने के पहले मैं कुछ बोलूं। तो धन्यवाद।